Can you hear me? Namaskar. Hello, hello. Is my voice clear? अभी क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा. हेलो, हेलो. वन क्लास फॉर डेडिकेटेड इसरो नॉन टेक्निकल. अच्छा, अभी वॉइस क्लियर है सर? अभी वॉइस क्लियर है सर? नो साउंड. अरे यार, साउंड नहीं आ रहा है. अरे यार, so today what I do is I'll cover theory rather than only questions. I'll cover theory. ठीक है. Okay, shall we start with your permission? Shall we start with your permission? Okay, good. Now, my dear students, there are different thermodynamic cycles. So first we will take Rankine cycle. Okay. I'll try my level best to cover this cycle in a neat, complete manner. Okay, sir? Chalo. So this also falls under vapor power cycles. Vapor power cycles. Okay. So the working fluid is water. But you know, as the working fluid is water, its phase changes, but the working fluid is water. Okay. Now the question is, my dear students, तो आज मैं क्या क्या कर रहा हूँ? What exactly is Carnot cycle? Vapor cycle? What is Rankine cycle? Why the efficiency of Rankine cycle is more than sorry? Why the efficiency of Carnot cycle is more than Rankine cycle? And we will be comparing Carnot and Rankine on different parameters, and why Carnot cycle is not a practical cycle. What prompted us to start? My dear students, let me tell you very clearly. So I have no problem with language. I can teach you purely in English without using even a single Hindi word. Point number one. Second, मैं आराम से हिंदी के माध्यम में भी आपको पढ़ाऊंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा. तो लैंग्वेज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो इन फ्यूचर if I plan, I'll be planning separately for English students, separately for Hindi students. So don't worry about the language. थोड़ा मेरे ऊपर लोड ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर. Will it be okay? Okay, right. Now, okay, sir. Now, uh, what is the reason for using water as a working fluid? The reason for using water as a working fluid is it is chemically stable. Chemically stable. The second one is it is non-toxic. And third one is it is cheap and easily available. These are the three reasons for using water as a working fluid. Will it be okay, sir? Wait, my dear. Let me first cover the theory. तो आप क्वेश्चंस के पीछे मतलब देखो, मुझे समझ में आया. Because I have not covered theory, so I am covering theory. Because in my regular plus classes also, I have not covered theory. Therefore, I am covering theory. Will there be any problem, sir? So, कोई दिक्कत है सर आपको? No. Right. देखिए. So देखो, these are the reasons for using water. Reasons for using water. Okay, right. Now, the next term that we use is specific steam consumption. Specific steam consumption. And this is SSC. First, we'll see mathematically what it is.
देन विल सी फिजिकली। पहले मैथमेटिकली एसएससी होता क्या है देखेंगे, उसके बाद हम इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट विल सी मैथमेटिकली व्हाट इट इज। You know, my dear students, the specific steam consumption is defined as, what is the working fluid here? It is water or steam. Okay, right. So what is the mass flow rate of steam, or how much steam is consumed? Because for developing power some working fluid is required. तो power develop करने के लिए कुछ working fluid तो चाहिए. For example, if you have IC engines, automobile engines, petrol engine, तो petrol तो चाहिए power develop करने के लिए. For diesel engines you need diesel. For CI engines you need diesel. Similarly, for developing power in these thermal power plants you need steam. Okay, how much steam is consumed to develop so much of net power? So please look at that. This is a cycle. ध्यान से सुनिएगा सर. Let me cover in detailed manner. थोड़ा fast और detail में cover करूंगा, टेंशन मत लेना. So okay, and my dear students, to develop so much of net power, why do I use net power? कभी भी याद रखना, in a cycle we are always interested in net power. ऐसा नहीं कि there are power consuming devices in a cycle, there are power developing there are power consuming devices, there are power developing devices. मतलब थोड़े डिवाइस वर्क अब्सॉर्ब करते हैं, उनको देना पड़ता है, लाइक कंप्रेसर पंप, एंड थोड़े डिवाइसेस वर्क डेवलप करते हैं, लाइक योर टरबाइन. तो व्हेन आई यूज द वर्ड नेट पावर, मतलब टरबाइन मतलब पॉजिटिव में से नेगेटिव निकाल देना, फ्रॉम पॉजिटिव यू रिमूव नेगेटिव, वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट इज द नेट पावर. सो टू डेवलप सो मच ऑफ नेट पावर, क्यों, व्हाई शुड आई यू गो फॉर नेट पावर सर, व्हाई नॉट पॉजिटिव पावर? ध्यान से सुनो. तो एक सेकंड, आई एम डूइंग अ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, मेरा शॉप है, स्टेशनरी का शॉप है. मान लो मैं 10,000 रुपए का धंधा किया. आई हैव there is a business of 10,000 per day. So out of 10,000 I have to bring papers, I have to bring pen, so I have to spend some money. So after removing all these from 10,000, data say my expenses are 8,000. So from 10,000 if I remove 8,000, that is the net profit what I'm getting. Similarly here, net work, when I use the word, that is from the turbine, from the positive work you remove negative work, so you get whatever the power you are getting, that is the net power. देखो, net power can be written as mass flow rate of the steam into network. And you know, the mass flow rate of the steam is expressed in kg per second, and the net power is kilojoule per kg. So ये हो जाएगा kilojoule per second is kilowatt. This power will be in kilowatt. Net power is in kilowatt. ठीक है सर. तो एक बार देख लीजिए सर, ध्यान से सुनो. The mass flow rate of the steam, let me write it as m dot s by net power. What is net power? Mass flow rate of steam into W net. So this can be written as, my dear students, this ms is gone. So SSC is equal to 1 by W net, and W net is taken in kilojoule per kg. Very good sir. Now let me make some changes. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, SSC is equal to, ये kg will go to the top, kg by W net and kilojoule. मेरे विद्यार्थी, मैं क्या कर रहा हूं इसको, आई डिवाइड विद सेकंड, मल्टीप्लाई विद सेकंड. कैन यू टेल मी व्हाट इज किलोजूल पर सेकंड? किलोजूल पर सेकंड इज किलोवाट. तो एसएससी इज इक्वल टू kg by this is W net, this is W net. Very good. What is kilojoule per second? Kilowatt into second. And you know, 1 hour is equal to 3600 second, or 1 second is equal to how many hours? तो 1 second can be written as 1 by 3600 of the hour. तो यहाँ पे सेकंड को 1 by 3600 आवर से रिप्लेस करना. सो SSC is equal to, my dear students, SSC is equal to kg by W net, okay, W net, kilowatt, okay, second. What is second, sir? 1 second, 1 by 3600 of the hour, 1 by 3600 of the hour. So ये 3600 will go to the top. So specific steam consumption is 3600 by W net. Very good, sir. And unit देखो, kg per kilowatt hour. Yes. This is the equation that you have to remember for SSC. Mathematically, this is the equation. Now I'll tell you what is the physical explanation. Sir, let me tell you very clearly. First, let me focus on concepts. After completing concepts, I'll be taking care of your questions. थोड़ा मैं mood में हूँ sir. When I am in mood, please don't disturb me and don't feel bad also if I do not take care of your questions. Someone has put, please, it's a request to all of you. First let me cover sir without wasting your time, then I'll take care of your questions. So this is the equation I got. SSC is 3600 by W net kilowatt per hour. देखो एक सेकंड. Specific steam consumption is equal to 3600 by
W net. What is the unit, sir? इस specific steam consumption का unit होता है kg per kilowatt hour. But what is the unit of W net? Already you have seen this W net is taken in kilojoule per kg. So therefore, now I'll write very clearly. This W net is in kilojoule per kg. For example, I'll tell you one thing very clearly. He may be giving you in examination the turbine work is 3600, sorry, the turbine work is say 2600 kilojoule per kg, and the pump work is, let us say, 10 kilojoule per kg. What is SSC? Don't do anything. Just calculate network, that is turbine minus pump. So you will get the network and keep that network in kilojoule per kg. 2600 minus 10 is 2500. So many kilojoule per kg. So therefore, SSC will be equal to 3600 by W net. What is W net? 2500. So what will be the unit of W net? It will be kg per kilowatt hour. Likewise, you can calculate. Is the concept clear, sir? क्या मैथमेटिकली समझ में आया सभी को? मैथमेटिकली सबको समझ में आया सर? अब फिजिकल मीनिंग देखेंगे. Now let's see the physical meaning. So look at the specific steam consumption is given by 3600 by W net, and this complete unit of SSC is kg per kilowatt hour. But to get this in kg per kilowatt hour, this network should be kilojoule per kg. Is it clear, my dear students? Okay, good. Now let's see the physical meaning of this. It actually shows. So the fundamental definition of SSC is, the fundamental definition of SSC is mass of steam consumed for net power. The physical meaning is इतना नेट पावर डेवलप करने के लिए, टू डेवलप दिस मच ऑफ नेट पावर, हाउ मच मास ऑफ स्टीम इज कंज्यूम्ड, दैट इज आवर एसएससी. सो इन इंटरव्यूज इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एसएससी, आपको यह बताना है उतना नेट पावर डेवलप करने के लिए कितना स्टीम कंज्यूम होगा, दैट इज आवर एसएससी. तो एसएससी इज एक्चुअली शोइंग द मास कंजम्पशन ऑफ स्टीम, the mass consumption of steam. My dear students, if the mass consumption or SSC is more, definitely to consume that much mass, the size of the plant will be more. So SSC is actually representing the size of the plant. It is actually showing the size of the plant. अगर SSC ज्यादा है मतलब steam consumption, if SSC is more, it means my mass of steam consumption will be more. To consume that much mass, the size will be more. SSC ज्यादा, size ज्यादा. SSC छोटा, size छोटा. Is it clear, my dear students? In interviews you can answer like this. Is it okay? बोलो हाँ या ना? Yes, very good, sir. Very good. अब ये हो गया, sir. Now there is one term known as work ratio. Work ratio. We designate it with RW. It is defined as the net work by positive work. The work ratio is defined as the net work by positive work. Okay. So what is the net work, sir? ध्यान से सुनो. The net work can be written as positive work minus negative work divided by positive work. Very good, sir. This can also be written as, this is 1 minus W negative by W positive. So this can also be written like this. अब देखो सर, ध्यान से सुनिएगा सर. Work ratio is net work by positive work. Net work by positive work. Net work is positive work minus negative work. ध्यान से सुनिएगा. If the cycle is a gas turbine cycle, the negative work will be compressor work. क्योंकि गैस टर्बाइन्स में वर्किंग फ्लूइड गैस होता है, तो गैस को प्रेशर बढ़ाने के लिए वी नीड कंप्रेसर. सो देयरफॉर इन गैस टर्बाइन्स इन जीटी नेगेटिव वर्क विल बी compressor. In vapor power cycles which we are discussing now, that is Rankine cycle, the negative work will be pump in Rankine cycle. So in Rankine cycle the negative is pump. So therefore I can write the work ratio as net work by positive work. Net work is turbine
in this chapter I am dealing, it can be compressor also, but if it is a gas turbine it can be compressor by positive work. Who is developing positive work? Turbine is developing positive work. This is the work ratio. Now let us focus on this. कुछ अच्छे questions आएंगे sir. Some good questions can be expected from this area. Let's see what are those. Now my dear students, you know, I have derived one equation in thermodynamics. The work for open system, steady flow open system के लिए मैं एक इक्वेशन डिराइव किया था सर. तो माइनस VdP for a reversible process under steady flow condition. Very good sir. And you know my dear students, if it is a compressor, the working fluid will be gas. So if it is a gas, the volume of the gas will be very large. Gases occupy large volume. So if the working fluid is gas, in gas turbines for in compressor we have a gas. So the volume of the gas is very large. So therefore to compress that much volume, the compression work will be more. So that's why in gas turbines about 40 to 60% of the turbine work will be consumed by the what I say turbine will be consumed by the 40 to 60% of the work developed by the turbine is taken by gas, that is compressor. That's why इन गैस टर्बाइंस वर्क रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि पंप इन गैस टर्बाइंस यहाँ पे कंप्रेसर आता है तो कंप्रेसर बहुत ही ज्यादा वर्क लेता है. सो देयरफॉर द नेट वर्क विल बी लेस, सो वर्क रेशियो विल बी लेस इन केस ऑफ गैस टर्बाइंस. सो इन गैस टर्बाइंस द वर्क रेशियो इज अबाउट 40 to 60%. इसका मतलब 40 to 60% है उसका, तो बहुत ज्यादा इज टेकन बाय योर कंप्रेसर. Now let us discuss here Rankine cycle. In Rankine cycle we use pump, मतलब लिक्विड को पंप करते हैं सर. तो लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल. जब ये स्मॉल है तो पंप वर्क विल बी वेरी स्मॉल. व्हेन पंप वर्क इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंपेयर टू टर्बाइन वर्क. जब पंप वर्क बहुत ही नेग्लिजिबल है, ये बहुत ही कम होता है, तो ये रेशियो क्या होगा? ऑलमोस्ट 1. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, विच साइकिल हैज द हाईएस्ट वर्क रेशियो? इट इज द रैंकाइन साइकिल. वो ऑटो साइकिल देगा, डीजल साइकिल देगा, देन कार्नोट साइकिल देगा, मे बी गैस टर्बाइन साइकिल, बट रैंकाइन साइकिल हैज द हाईएस्ट वर्क रेशियो. इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी, रफली अराउंड 0.96 to 0.98 होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है. तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सर? एनीवन, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सर? What is the reason for this, sir? What is the reason for this, sir? Because in Rankine cycle the working fluid is liquid, मतलब the pump liquid is pumped, तो liquid specific volume is small, pump work will be negligible. ठीक है सर. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना होता है तो आप एग्जाम में, इफ कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, यू कैन इजीली नेग्लेक्ट पंप वर्क directly. Okay, I'll tell you how to attack questions. To this, is it clear, sir? This is clear, I'll proceed. If this clear, shall I proceed with your permission? Yeah. So very good. So you know the work ratio is net work by positive work. There is one term known as back work ratio. देखो एक बार. There is one term known as back work ratio. RBW, and it is defined as the negative work by positive work. ठीक है. So देखो, my dear students, what is work ratio? Work ratio is net work. Net is positive work minus, देखो, what is net work, sir? Net work is positive work minus negative work by positive work. This is our work ratio. So work ratio can be written as, so this can be written as, देखो, this by this is 1 minus W negative by W positive. So can I write this as work ratio is equal to 1 minus, what is negative work by positive work? Back work ratio. This term can be written as, my dear students, this term can be written as back work ratio. So this was back work ratio. तो याद रखना, the work ratio plus back work ratio is equal to 1. Definitely, which work do you, which ratio is desirable? Higher ratio of which work is desirable? Which ratio is desirable? Work ratio, because work ratio is net by positive. ये तो back work ratio is negative. If the negative work is more, we have to supply more work. Up to this, if it is clear, I'll proceed, sir. Is it okay? Is it okay? चलो यहाँ पे. Now let's go to
Carnot vapor power cycle. Carnot. Then we will develop Rankine cycle. ठीक है sir. At least you know this diagram na. So this is a saturated liquid curve. This is saturated vapor curve. This is superheated vapor. This is subcooled or undercooled liquid. And this is wet region. There is a liquid and vapor. And this is the critical point. Okay, sir. Now let me draw Carnot cycle. Can you tell me Carnot cycle comprises of how many processes? Four. What are those processes? Two isothermal, two reversible adiabatic isentropic. देखो. Yes, this is our Carnot cycle, sir. Very good. This is our Carnot cycle. And now, actually in my regular classes, I'll tell you why it is to be stopped here by ये सारे बताता हूँ. अभी actually you need lot of time for that, but अभी जरूरी नहीं है. ठीक है सर. This is occurring in compressor. Why compressor, sir? क्या आप बता सकते what is there at point one? There is a liquid, there is a vapor. Understand carefully. So when I show you this point, actually, whatever the liquid is there, यहाँ पे थोड़ा liquid है, वो actually the state of that liquid is here. यहाँ पे vapor है, the state of vapor is this. ये है सर. तो ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया सर. ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया. बहुत बढ़िया सर. बहुत बढ़िया. नो प्रॉब्लम एट ऑल. नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब देखो. Leave it. Look at no problem at all. Therefore, देखो. Now there is a compressor. This is heat supply. So when you are supplying heat, my liquid is converted into vapor. This is occurring in boiler, heat supply, and this is occurring in turbine. This is occurring in turbine, and this is occurring in condenser. What is condenser? Conversion of vapor to liquid. This is occurring in condenser. What is condensation? It is a heat exchanger wherein our fluid is rejecting heat and vapor is converted into liquid. Okay, it is coming towards liquid, therefore it is condensing. And this is compression, and this is heat supply, and this is turbine work. Turbine work. So two reversible adiabatic isentropic and two isothermal processes. Now let us see what are the problems associated with this Carnot vapor cycle. चलो पहला point ध्यान से सुनो. You know, if you see the point 4, what is the state of the fluid at point 4? मतलब इसका state कहां पे है? वो तो wet region में है. Means there is a liquid, there is a vapor here. And you know what is the density of liquid? Very high. Very high. मतलब यहाँ का dryness fraction अगर कम होता है, what do you mean by dryness fraction? Mass of vapor to the total mass. अगर dryness fraction कम हो रहा है, इसका मतलब liquid का content ज्यादा है, vapor का content कम है. More dryness means towards right, less dryness means towards right. तो अगर ये यहाँ पे है, तो डेफिनेटली एट दिस स्टेट देयर इज अ लिक्विड. यहां पे कुछ लिक्विड है. यहां पे कुछ लिक्विड है. बहुत बढ़िया. तो क्या होगा? तो एक्चुअली द फ्लूइड फ्लोस एट वेरी हाई वेलोसिटीज. अब मुझे बताओ सर, आपको बारिश देखो देखो, मैं आपको पानी से मतलब हाई वेलोसिटी से आपके ऊपर मारूंगा एंड जस्ट एयर को सेम वेलोसिटी से मारूंगा, किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? सो आई रिपीट सर, वाटर से आपको मैं बहुत फास्ट मारूंगा और एयर से बहुत फास्ट मारूंगा. I'll beat you with air. I'll throw air on you. I'll throw water on you, both at same velocities. Which one will show you the higher velocity, sir? Liquid. Liquid. उसका density बहुत ही ज्यादा है, sir. Therefore, what happens, you know, as there is a liquid vapor here, so liquid, as the velocity is very high, that liquid will impact the मतलब इतना हाई वेलोसिटी से ब्लेड को इंपैक्ट होके ब्लेड्स को इरोड कर देते हैं सर. दैट्स व्हाई हियर द ड्राइनेस फ्रैक्शन शुड नॉट बी लो. आप हमेशा 0.87 से ज्यादा रखने की कोशिश करना. सो इट शुड बी टुवर्ड्स राइट. दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक. सेकंड ड्रॉबैक. व्हाट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ Carnot cycle? The saturate देखो, saturated vapor which is expanding in a turbine is is in wet region. Because of, as this is in wet region, the velocity of the liquid will be high and that will damage the turbine blades. Point number one. Second, and you are stopping the condensation here. Actually condensation should occur completely. So यहाँ पे condensation रुक रहा है, तो sudden stopping of condensation is very difficult. And moreover,
यहाँ पे व्हाट डू वी हैव, देयर इज अ लिक्विड, देयर इज अ वेपर, एंड टू फेस में कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन अ कंप्रेसर विच हैंडल्स बोथ लिक्विड एंड वेपर, दोनों को लेके, लिक्विड और वेपर के। अरे यार, कंप्रेसर मींस प्योर गैस को कंप्रेस करेगा, वो पंप मींस प्योर लिक्विड को, बट इफ यू हैव बोथ इट विल बी डिफिकल्ट टू डिजाइन सच a device which handles. That's why Carnot vapor power cycle is not used in practice. What are the reasons? Sudden stopping of condensation at point 2 is difficult. Compressing both liquid vapor is difficult, and at the turbine exit, the dryness fraction is very low, and thereby it will damage the or erode the turbine blades. Because of these reasons, I don't use Carnot cycle. It's only a reference cycle. लेकिन एक observe करना, in Carnot, all the heat is added at one fixed temperature. In Carnot, all the heat is added at one fixed temperature, and all the heat is rejected. देखो, this is heat rejection. All the heat is rejected at one particular temperature. All the heat is added at one particular temperature. So, okay, no problem. And you know, my dear students, अगर आप देख रहे हैं work ratio of Carnot cycle, it is the turbine work minus compressor. ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिक्विड भी है, वेपर भी है, बिकॉज देर इज अ वेपर, वेपर ऑक्यूपाइज लार्ज वॉल्यूम, टू कंप्रेस लार्ज वॉल्यूम वर्क विल बी मोर, सो इसीलिए कार्नोट साइकिल में कंप्रेसर वर्क ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई द नेट वर्क विल बी लेस इन कार्नोट साइकिल. इज इट ओके सर? हाँ, क्या बोलते हैं, अभी कुछ चल रहा है ना, टरबाइन बचाओ उत्सव, बहुत बढ़िया, बहुत सही बोले आप, टरबाइन बचाओ उत्सव, टरबाइन बचाओ उत्सव, वेरी गुड, वाह, मेरे बच्चे ऐसे होना चाहिए सर. बहुत बढ़िया, लेट्स प्रोसीड. इज इट ओके? शैल वी प्रोसीड विथ योर परमिशन? वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं सर. नाउ दैट्स व्हाई कार्नोट इज नॉट यूज्ड. अब मुझे बताओ, लेट अस मेक सम मॉडिफिकेशंस. नाउ आई राइट सिंपल रैंकाइन साइकिल. सिंपल रैंकाइन साइकिल, देखो, देखो सर, लेट अस टेक कार्नोट साइकिल. ठीक है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस साइकिल. मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं, इफ आई पुश दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, विल देर बी एनी, एक सेकेंड, पहले हम इसको नंबर दे देंगे सर. 1 2 3 4. हाँ, look at carefully. So rather than stopping here, let me see that the condensation is stopping here. कोई टेंशन नहीं सर. नाउ देखो, अब ये लिक्विड आ गया, पंप करो, पंप करो, पंप किए, पंपिंग विल इंक्रीज द प्रेशर, पंप करो, वेरी गुड सर. उसके बाद हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देखो देखो, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, बिल्कुल सही है सर. देन एक्सपेंशन, एंड दिस इज नोन एज सिंपल रैंकिन साइकिल. सिंपल रैंकिन साइकिल. तो यहां स्टॉप करने के बजाय आप यहां स्टॉप करो. सो दिस इज हीट रिजेक्शन. So now 4 to 1 dash is the heat rejection. Now what is this 1 dash to 2 dash? Pumping. What is 2 dash to 3? Heat supply. Heat supply. Absolutely fine. Wonderful sir. This is a simple Rankine cycle. तो अभी भी we have a problem. What is the problem? This point 4. It is in wet region. Don't worry sir. हम इसको धीरे से right को shift करेंगे. So is the simple Rankine cycle clear sir? Clear? Okay, so we understood what exactly is a simple Rankine cycle. Absolutely fine. अब देखते हैं सर, देखो एक बार, अब हम क्या करेंगे. It's like this sir. Let me show you on the, देखो एक बार, please listen.
डोंट वरी सर। 1 2 is pumping, 2 to 3 is heat supply, 3 to 4 is expansion, and 4 to 1 is heat rejection. ये हो गया सर। दिस इज अवर रैंकिन साइकिल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो इसको मैं लाइन डायग्राम से बताऊंगा। ये 2 to 3 कहां पे हो रहा है सर? दिस 2 to 3 is occurring in a device known as boiler. So what is the process occurring in boiler? Constant pressure heat supply, because it is entering the boiler at point 2. ठीक है सर, it is entering the boiler at 2. What is the state of the fluid? It is in liquid state, at liquid state. अब हम क्या कर रहे हैं? हीट को सप्लाई कर रहे हैं सर। ठीक है सर, when heat is supplied, what is the process taking place in boiler? देखो एक बार, 2 to 3, it is a constant pressure process, it is a constant pressure heat supply। 2 से लेकर 3 तक heat is supplied, very good। And 3 to 4 is occurring in turbine। This is occurring in turbine। 3 से लेकर 4 तक it is occurring in turbine। 3 to 4, okay, no problem। And 4 to 1, this is expansion in turbine। 4 to 1 is condensation। So what is happening in 4 to 1? The heat is rejected, and 2 to 3 heat is supplied। So therefore now this is my condensation, so thereby heat is rejected। So it is from 4 to 3। excellent sir। 4 से 3। now कहाँ गया रे मैं? 4 से 1 सर, मैं पागल हो गया। It is from 4 to 1, it is from 4 to 1 condensation। now here we have a pump, here we have a pump। 4 से लेकर देखो, so 1 पे enter हो रहा है, at 1 it is entering the pump and it is leaving at point 2। 1 to 2 is occurring in pump। this is my line diagram। and turbine में आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है, ठीक है सर, नेट वर्क आउटपुट मिल रहा है। दिस इज ओके सर। ये हमारा लाइन डायग्राम ऑफ रैंकिन साइकिल, दिस इज टीएस डायग्राम ऑफ रैंकिन साइकिल। यहां तक सभी को समझ में आई सर? Now, let us start our analysis। Let's start the analysis of the cycle। देखो एक बार मित्रों, let's start the analysis of the cycle। मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि you should not by heart anything। Analysis of the cycle। Before we analyze, there are some important assumptions। Number one, each device is treated as each device is treated as a steady flow device। ठीक है, मतलब every device is treated as steady flow device। Second, the kinetic energy and potential energy changes are neglected। Third, the pumping and expansion, where is that expansion taking place? Turbine, are assumed to be isentropic। चलो, let us apply the equation sir। अब देखो, for all these 4 devices, एक बार देखो, for all these 4 devices, there are 4 devices: boiler, turbine, condenser, pump। every device देखो, fluid अंदर आ रहा है, fluid is entering, fluid is leaving, fluid is what is the working fluid? water। देखो यहाँ पे high pressure, high temperature steam is entering and steam is expanding। that steam is undergoing condensation। now that steam will convert into liquid, and from liquid is pumped, and that water is again heated। this is the cycle going on, going on, going on, and the power is developed। ठीक है सर मेरे प्यारे दोस्तों, so let me apply steady flow energy equation for every device। देखो, what is steady flow energy equation? हम पढ़े थे सर। what is steady flow energy equation? h1 plus, suppose the process is occurring from, my dear students, 1 to 2। देखो, हाँ, कहाँ गया रे वो? ठीक है, हाँ देखो, देखो, हाँ, ओ, यहीं से कर लेंगे सर।
कोई बात नहीं, इधर देखो। नाउ लेट मी अप्लाई द इक्वेशन फॉर बॉयलर। देखो आराम से देखो, लेट अस अप्लाई फॉर पंप 1 to 2। लेट अस अप्लाई फॉर पंप। कैसा अप्लाई करेंगे सर? 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक देखो, H1 प्लस C1 square/2 प्लस Z1G प्लस Q। डू यू नो द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? वी हैव स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स। This is the steady flow energy equation. This is the steady flow energy equation. So kinetic potential in changes are neglected. And you know very well, in pump already I have assumed the pumping process to be reversible adiabatic. Agar adiabatic hota hai, so what will be the heat transfer? Zero. So therefore, H1 is equal to H2 plus W, or W can be written as H1 minus H2, or this W can also be written as, if I take minus common, H2 minus H1। ठीक है सर, ये माइनस को इधर अटैच करना। व्हाट इज नेगेटिव वर्क? इट इज H2 minus H1। व्हाट डज माइनस ऑफ वर्क मीन? इट इज pump work। So I will write the pump work is given by H2 minus H1। And please, it's a request to all of you, don't write this as CPT2 CPT1, because it is not an ideal gas। You can write enthalpy as CPT for ideal gases, यहाँ पे मत लिखना, just leave in terms of enthalpies। क्लैरिटी आ गया सर सभी को? क्लैरिटी आ गया सर सभी को? यस। सो द पंप वर्क इज 2 - 1। नाउ लेट अस गो टू बॉयलर। सो इफ आई अप्लाई बॉयलर से, कहां से अप्लाई करेंगे सर मित्रों? यहां, एक सेकंड देखो, बॉयलर। सो फॉर बॉयलर आई कैन राइट, अप्लाई करो 2 से लेकर 3 तक। व्हाट इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? H2 प्लस C2 square/2 प्लस Z2G प्लस Q इज इक्वल टू H3 प्लस C3 square/2 प्लस Z3G प्लस W। एंड काइनेटिक पोटेंशियल चेंजेस आर नेग्लेक्टेड। एंड बॉयलर में देर इज अ हीट सप्लाई, तो बॉयलर इज अ हीट एक्सचेंजर। तो बॉयलर में देर इज नो वर्क, इट इज अ प्योर हीट एक्सचेंजर, तो सिंपली तो वर्क जीरो होगा। सो देयरफॉर H2 plus Q is equal to H3। So heat supply is equal to H3 minus H2। Very good, sir। Again, don't write CPT3 CPT4 because this is not an ideal gas। So heat supplied in boiler is given by 3 minus 2। Very good, sir। Now next we'll go to turbine। तो सेम इक्वेशन अगर आप टर्बाइन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर? 3 to 4 अप्लाई कर लेना। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? H3 plus C3 square/2 plus Z3G plus Q is equal to H4 plus C4 square/2 plus Z4G plus W। काइनेटिक पोटेंशियल तो हट गया, तो टर्बाइन इट इज अ रिवर्सिबल एडिबैटिक, तो हीट ट्रांसफर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर H3 is equal to H4 plus वर्क। So W is equal to H3 minus H4। So 3 minus 4, 3 minus 4, 3 minus 4 is a positive work, टर्बाइन वर्क। तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव वर्क, टर्बाइन वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 to 1। तो व्हाट इज हैपनिंग इन 4 to 1? इट इज अ हीट रिजेक्शन। तो क्या करेंगे सर? अप्लाई करो। तो 4 to 1 यहां लिखूंगा सर, दिस इज अ कंडेंसर। तो 4 पे फ्लूइड आ रहा है एंड 1 पे लीव कर रहा है एंड देयर इज अ हीट रिजेक्शन। दिस इज कंडेंसर। तो अप्लाई करो H4 plus C4 square/2 plus Z4G plus Q is equal to H3 plus C3 square/2 plus Z3G plus W। Absolutely, kinetic potential is gone। And yeah, it is again a heat exchanger, so condenser is again a heat exchanger, so work is zero। So therefore Q will be equal to H3 minus H4। Q is H3 minus H4, so Q is equal to minus of H4 minus H3। So negative Q is equal to H4 minus H3। Negative heat is nothing but heat rejection is equal to H4 minus H3। याद रखना सर। Hope all these equations are clear। Hope all these equations are clear। क्या बचा है सर? Efficiency। आप बता सकते हैं सर what is efficiency? Efficiency of a simple Rankine cycle is, it is, always remember, in efficiency we are interested in useful work। What power is developed by the turbine, that is not of interest, what is the net I can utilize। So after removing pump work, whatever you are getting, तो पंप वर्क निकालने के बाद जो भी बच रहा है वो होगा आपका नेटवर्क। तो क्या हम इसको ऐसे निकालेंगे? टर्बाइन। सो मित्रों, so this can be written as net work by
heat supply. Absolutely fine. Output by input. So efficiency, actually this is a thermal efficiency. Why do we call it as thermal efficiency? Because the supply energy is thermal heat. So network is turbine minus pump work by heat supply. अभी तो देखिए टरबाइन कहां से हो रहा है सर, देखो एक बार टरबाइन वर्क कहां से है सर, आप बताइए। टरबाइन इज फ्रॉम 3 to 4, तो H3 minus H4, वेरी गुड सर। H3 minus H4, H3 minus H4 minus pump. Pumping is from 1 to 2, so therefore H2 minus H1. I think already pump work we have developed. What is the pump work, sir? Pump work is kahan hai re pump work? H2 minus H1. Absolutely fine. H2 minus H1 divided by supply. And you are supplying from where? देखो एक बार. Supply is from 2 to 3, H3 minus H2. H3 minus H2. So this is my equation for the efficiency of the cycle. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? If this is clear, I'll proceed, sir. कंडेंसर में इक्वेशन आप गलत यूज किए, कहां पे है देखते हैं एक बार। 4 से लेकर 1 1, आई एम सॉरी सर। अरे यार, 4 से लेकर 1 आप सही पकड़े, 4 से लेकर 1 तक इट इज 4 to 1। कोई भी कुछ नहीं बोले देखो, कोई भी कुछ नहीं बोले देखो, गलत। ओके, H4 plus C4 square root 2 Z4 G is equal to H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus Z1G plus Q। ठीक है सर, तो ये गॉन, तो इट विल बी H4 correct minus of H4 minus H1, or negative Q is equal to H4 minus H1. So this will be H4 minus H1, sir. Yes, exactly. You are right, Mitra. So hope the equation is clear. Hope the equation is clear. Clear? To this, if it is clear, I'll proceed, Sarji. Okay, तो ये हो गया आपका the efficiency of a rank. Generally, I repeat, generally pump work is small and hence it can be neglected. So if the pump work is neglected, what will be the efficiency, sir? अगर pump work को neglect कर दिए तो efficiency क्या होगा? It will be H3 minus H4. एक second please. हाँ साहब, हेलो, क्या बोले? उनसे पूछो, हाँ पूछो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा मैं क्लास में हूँ साहब। हाँ 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 हाँ, मैं क्लास में हूँ साहब, तो अभी तो क्या करें फिर, बोलो। नहीं, उन देखो साहब, उनसे पूछने का क्या है, डाल देंगे, ऐसा क्या है, ये पूछना क्या है उनको, फिर उनका पर्सनल है ना। नहीं नहीं साहब, उनको नहीं। ओके, ठीक है। हेलो, हेलो। ओके, ओके, राइट। एक सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, right. So if the pump work is neglected, H3 minus H4 by H3 minus H2, ये हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। This is the equation. If the pump work is neglected, directly you can, if this is neglected, it will be turbine by heat supply. चलो कोई बात नहीं सर। Now shall we proceed with your permission? Yes sir.
अब देखो, नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस सी व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मोर देन रैंकिन साइकिल। कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन देखेंगे सर। ओके, राइट। रीजन फॉर हायर efficiency of Carnot cycle compared to Rankine cycle। ठीक है सर, आराम से देखो। एक सेकंड, दिस इज Carnot cycle। Okay, fine. This is Carnot cycle. Let us superimpose Rankine cycle। ठीक है सर। इसको क्या लिए थे सर? We have taken this as 1, this as 2, this as 3, this as 4। ठीक है, तो let us take this as 1 dash 2 dash। तो let me write very clearly 1 2 3 4। देखो एक बार, 1 2 3 4, this is a Carnot cycle, right? 1 dash 2 dash 2 3 4, 1 dash 2 dash 2 3 4, it is a Rankine cycle। ठीक है सर, इट इज द रैंकिन साइकिल। ऑब्जर्व केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, मित्रों एक बार देखना, व्हाट डज एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट? हीट ट्रांसफर। एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर। इज इट ओके? बोलो सर। हाँ, देखो अब देखो, व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ, आई रिपीट, व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। लेट्स सी। देखो एक बार, इफ यू अंडरस्टैंड क्लियरली, देखो देखो एक बार, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, कार्नोट की बात कर रहे हैं सर हम। देखो एक बार, कार्नोट की बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर। इज इट करेक्ट सर? कार्नोट एफिशिएंसी, सो कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट्स। Okay, right. My dear Arun, in Rankine cycle, even though the network is more, but the heat supply is also more, because efficiency doesn't depend just only on the network. So efficiency is the ratio of network by heat supply। अब देखो, एक सेकंड देखो, देखो देखो 1 minus T load। अब देखो सर, in case of Carnot cycle, in case of Carnot cycle, this is the maximum temperature। कार्नोट साइकिल में ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है सर, मैक्सिमम। सो कार्नोट साइकिल में ऑल द हीट इज एडेड एट द सेम टेम्परेचर, 2 से लेकर 3 तक ऑल द हीट इज एडेड एट द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है सर, बट इन रैंकिन साइकिल द सप्लाई इज स्टार्टिंग एट सम लोअर, मैक्सिमम से लोअर, यहां से शुरू हो रहा है रैंकिन में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द हीट सप्लाई, देखो फ्रॉम हियर आप सप्लाई करते 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 यहां तक सप्लाई किए। कहां से कहां तक सप्लाई किए? 2 से लेकर 3 तक सप्लाई किए, 2 से लेकर 3 तक सप्लाई किए। सो आप बताइए व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर? सो कम टेम्परेचर से शुरू करके मैक्सिमम गए, लेकिन इस मैक्सिमम कार्नोट से क्रॉस नहीं किए। व्हाट विल बी द एवरेज सर? व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर? देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज, अभी मैं बताता हूं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। कुछ समझ में आ रहा है सर? लेट मी एक्सप्लेन बिफोर आई प्रोसीड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
In Carnot cycle, all the heat is added at the highest temperature. So green line देखो highest temperature पे. But in Rankine, some heat is added at lower temperature, lower, reaching maximum, maintain that. So what will be the mean of addition? Mean of addition will be definitely इससे कम होगा. मतलब हायर टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन. सपोज इन कार्नोट साइकिल इफ दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर इन रैंकिन साइकिल? बोलो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर इन रैंकिन साइकिल? यहां से शुरू करें यहां, तो इसका मीन डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा सर. हाई टेम्परेचर, द हाईएस्ट और द मैक्सिमम टेम्परेचर इन रैंकाइन विल बी लोअर. जब हाई टेम्परेचर कम है रैंकाइन में, लेकिन लोअर टेम्परेचर दोनों में सेम है. देखो इन रैंकाइन साइकिल all the heat is rejected at same temperature. In Carnot cycle all the heat is rejected at same temperature. So दोनों में TL तो सेम है, बट TH क्या है सर? TH क्या है सर? TH रैंकाइन में कम है. जब रैंकाइन में TH कम है तो ये कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगा. When this value is more, negative of this value is more, means efficiency will be less. Is it clear, my dear students? So now I'll introduce the concept of mean temperature of heat addition. देखो देखो एक बार, देखो एक बार. My dear students, I'm just showing 2 dash to 3, 2 dash to 3, जहां से हीट सप्लाई रैंकिन में शुरू हो रहा है, टू 3 शो कर रहा हूं सर. 2 dash to 3, 2 dash is the supply, beginning of supply in Rankine cycle, and 3 is the point where it is stopped, where the heat supply stopped. So therefore 2 dash is this, 3 is this. अब देखो, this is S3 and this is S2. And you know very well, already we have calculated heat supply. This process is occurring where? ये 2 dash to 3 किस में हो रहा है सर? बॉयलर में हो रहा है. So what is the heat transfer in boiler? 2 dash to 3. If I apply steady flow energy equation, it will be H3 minus H2 dash. So heat supply is H3 minus H2 dash. So therefore heat supply is equal to H3 minus H2 dash. बहुत बढ़िया. This is the heat supply. देखो now you also know, एक सेकंड, लेट मी फाइंड आउट मेरे प्यारे दोस्तों, एक मीन टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे. देखो एक ऐसा टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट वन सच टेम्परेचर, ये वाला देखो. लेट मी से दिस एज मीन टेम्परेचर सच दैट, ध्यान से सुनो, whatever the area is there below the red line is also equal to area below this. देखो you know that heat supply, तो ये एरिया क्या शो कर रहा है सर मित्रों? व्हाट इज दिस एरिया शोइंग? देख एक सेकंड, what is this showing sir? Heat supply from 2 to 3, this is the heat supply. तो एरिया अंडर, मैं एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहा हूं, सो दैट whatever the heat is supplied, whatever the area is there, this area, मतलब ध्यान से सुनिएगा सर मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैं यहां अकोमोडेट करूंगा इस रीजन में. सो आई विल एडजस्ट दिस इन सच वे, इसको ऊपर नीचे करूंगा सच दैट जो भी एरिया इसके ऊपर का एरिया है वो यहां पे अकोमोडेट हो रहा है सर इस रीजन में, सो दैट ये पूरा एरिया दैट इज Tm into S3 minus S2 is equal to this heat supply. What is the heat supply sir? H3 minus H2 dash. नहीं है आपको समझ में? कसम से बोलो आया सर? तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं, आई एम एडजस्टिंग दिस इन सच वे दैट द एरिया अंडर दिस, ये जो एरिया है तो रेड लाइन के नीचे का एरिया, और अरे this area is exactly the same, this area is same. Hope this is clear. Is it clear sir? Yes or no? So therefore whatever the heat supply is there, H2 minus H2 is equal to एक mean temperature into entropy difference, because area TS diagram पे area देगा heat transfer, so Tm into S3 minus S2, Tm into S3 minus S2 is this area that is equal to this. तो यहां से मुझे Tm निकल के आएगा सर, that is H3 minus H2 dash by S3 minus S2. This will give me the mean temperature. देखो in Carnot cycle all the heat is supplied at this higher temperature, but Rankine it is less. So therefore as the mean temperature is less, the efficiency is less in Rankine cycle. Is it clear sir?
If this is clear, I'll proceed, sir. अब एक ब्यूटीफुल ग्राफ दूंगा, टेबल दूंगा सर। यहां पे पैरामीटर, यहां पे कार्नोट, यहां पे रैंकाइन। सो आई विल राइट मीन टेम्परेचर, एफिशिएंसी, कुछ पैरामीटर्स लिखूंगा सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दिस इज नेटवर्क specific steam consumption and the work ratio. Okay, right. In which case the mean temperature is more? बताओ सर, अब फिल करो इसको। In which case the mean temperature is more, Carnot or Rankine? I'm waiting for your answers. अरे Rankine में you are supplying from low to higher, so definitely it will be less. So therefore, in the mean temperature is more in Carnot. अरे sorry, Carnot mean temperature is high, Rankine less. एफिशिएंसी, अगर मीन टेम्परेचर ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा। इन अवेलेबिलिटी वी हैव स्टडीड the thermal energy at higher temperature has greater significance compared to the same thermal energy at lower temperature. तो ये हाई है तो मीन टेम्परेचर हाई, एफिशिएंसी विल बी मोर, तो एफिशिएंसी विल बी हाई। एंड मीन टेम्परेचर इज लेस, एफिशिएंसी विल बी लेस। वेरी गुड। नेटवर्क, ध्यान से सुनिएगा, देखो इन रैंकाइन साइकिल इट इज कंप्लीटली द पंप वर्क। यहाँ पे आप पंप यूज कर रहे हैं तो लिक्विड है, लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज लो, तो देयरफॉर देखो पंप वर्क इज नेग्लिजिबल। बट रैंक कार्नोट में वी हैव ए टू स्टेज। देखो इफ यू सी कार्नोट, कार्नोट में यहां से कर रहे हैं तो यहां पे वेपर भी है, वेपर वॉल्यूम इज मोर, कंप्रेशन वर्क इज मोर, सो व्हेन द कंप्रेशन वर्क इज मोर नेटवर्क विल बी लेस। सो इन कार्नोट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आप सिर्फ एफिशिएंसी ज्यादा देख के कंफ्यूज मत होना रैंकाइन कार्नोट साइकिल को। देयरफॉर network is less. Why? The compression work is more, network is more. And already you know the specific steam consumption is 3600 by W net. So as the network is more, network is less in Carnot cycle, network Carnot में कम है तो specific steam consumption ज्यादा होगा। So as the network is more in Rankine, so network ज्यादा है तो SSC will be less। ठीक है सर। अब देखो बैक वर्क रेशियो, नेट व्हाट इज वर्क रेशियो? इट इज द नेट वर्क बाय टरबाइन वर्क। in which case the network is more, network is more, network is less. When network is less, RW will be less. Network is more in Rankine, जब network is more in Rankine, network ज्यादा है तो RW will be more। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या ये सबको समझ में आया सर? एनी प्रॉब्लम सर? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्लियर? If this is clear, I'll proceed, sir. So what we do is, so I say, matlab, let me tell you, okay, should I cover theory like this or directly attack questions? थ्योरी, थ्योरी क्वेश्चंस भी करवा दीजिए, ठीक है। पहले थ्योरी, बहुत बढ़िया सर, पहले थ्योरी। ओके, अब थोड़ा आज मैं बहुत टायर्ड हो गया सर। मतलब कितने क्लासेस लिया पता है? मॉर्निंग एचएमटी का, उसके बाद एप्टीट्यूड का, उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ वाइब्रेशंस, उसके बाद ये क्लास। आज टुडे आई एम टोटली टायर्ड, तो आज मैं लाइक काइंडली एक्सक्यूज मी, आज मैं स्टॉप करता हूं।
तो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। इज इट ओके? आज का क्लास समझ में आया तो कमेंट्स में शो करना, कमेंट्स लीव करना। आज का क्लास समझ में आया तो लीव इन कमेंट्स। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास। ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।